Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine and doing well. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज की अच्छी बात से। सबसे पहले आप लोगों के साथ कुरान पाक की एक आयत शेयर करना चाहूँगी जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। अल्लाह अपनी तरफ आने का रास्ता उसे दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। और इसके अलावा आप लोगों के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का एक कौल शेयर करना चाहूँगी। लोग तुम्हारी अकल से तुम्हारी शख्सियत का वज़न करते हैं, लिहाजा तुम अपनी अकल का वज़न अपने इल्म से बढ़ाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कौल में बहुत ही ज़्यादा गहरी बात जिसको हमें समझाया जा रहा है वो इल्म की अहमियत है। लोग हमारी जो अकल होती है उसका जो अंदाज़ा लगाते हैं वो उससे हमारी शख्सियत का वो अंदाज़ा करते हैं, और जो हमारी अकल है उसको हम अपने इल्म से जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो knowledge is very important. Now dear students, in the today's lecture we are going to solve the exercise of unit 2. So for the solving of the exercise 2, let me just share the screen with you. Okay, so I hope all of you can see this screen. First of all, we will discuss the key points of this unit. In this unit, we have learned about the scalar and the vector quantities. The scalar quantities are the ones which are fully described with the magnitude and they do not need any kind of direction, while the vector quantities are the such quantities which require both the magnitude and the direction, and they obeys the vector rules of addition. They cannot be added or subtracted with the simple algebraic rules. Then the magnitude of the vector is the length or the size of the vector, and the magnitude of a vector is a scalar quantity, and the direction is the orientation of the vector in space, and it can be represented by using the unit vectors. The free body diagram is the diagram which includes the vector arrows representing every force acting on the chosen object due to some other object, but no forces acting on other objects. So that diagram is basically known as the free body diagram. The vector addition, the rules that apply to adding the vectors together, since they are not the simple number, so we have to follow the rules of the vector addition. And the resultant vector is the such vector that is the combined effect of the two or more vectors. And the component of a vector is a piece of a vector that points in either the vertical or horizontal direction, and every two-dimensional vector can be represented as a sum of two vertical and the horizontal vector components. तो जो वेक्टर है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहलाते हैं. Vector addition by the rectangular component. So to add the vectors, algebraically add their components to find the components of the sum. Just like if we want to add a plus b, then we have to add their components ax plus bx together to get cx, and ay plus by to get cy. And the product of the vector is the resultant of the vector when two vectors are multiplied. So the result obtained can be scalar quantity if we call it as the scalar product a dot b, and the result could be the vector quantity if we multiply a cross b to get the vector product. And equilibrium is the state of the body in which, under the action of the several forces and the torque acting together, there is no change in the translational motion and as well as the rotational motion. Or in general, we can say that there will be no acceleration produced. So then we can say that the body is present in the state of the equilibrium. So not only the objects that are at rest, but the moving objects with a constant velocity is also present in the state of the equilibrium. Then there are the two conditions of equilibrium which must be satisfied for an object to be in equilibrium, and that are the vector sum of all the forces on it must be 0, and the sum of all the torques that are calculated about any arbitrary axis must be equal to 0. And mathematically we can represent the two equations as follows. Now moving towards the MCQs of this unit. First of all, question number 1 is,
Two vectors lie with their tails at the same point. When the angle between them is increased by 20 degrees, their scalar product has the same magnitude but changes from positive to negative. The original angle between them was. So dear students, just think about it and let me know what will be the answer. दो वेक्टर्स हैं जिनके दरमियान जो एंगल है अगर हम उसको 20 डिग्री इंक्रीज कर दें तो उन्हीं दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा. सो ओरिजिनल एंगल क्या होना चाहिए जिसमें जब आप 20 ऐड करो तो स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए. मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअली होता क्या है. अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए बी तो इनका स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी जो कि इक्वल होना चाहिए ए बी कॉस ऑफ थीटा. तो ये बेसिकली एंगल थीटा के बारे में पूछा जा रहा है कि एंगल थीटा क्या होना चाहिए. Yes, Sarah, you're right. The right option is option D, that is 80 degree, because cos 0 से लेकर 90 तक जो है वो पॉजिटिव रहेगा. 90 प्लस जब हो जाएगा, 90 से इंक्रीज करेंगे तब एंगल जो है वो cos का 90 से अबव जो होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा. So cos 80 plus like 80 angle plus 20 is 110. So 110 is with the negative sign. So magnitude जो है वो change कर जाएगा from positive to negative. Question number 2 is the minimum number of vectors of unequal magnitude required to produce a zero resultant. So कितने हमें minimum number of vectors required हैं जिनको जब हम add करें तो उनका जो resultant है वो zero. Yes, Huda, you are right. It is 3. और वो 3 किस तरह से हैं? For example, this is a one vector. On the head, we will draw the second vector, and on the head of the second, we will draw the tail of the third. So अगर इस तरह से close triangle बन जाएगा या close loop अगर हम कह दें, so for a closed loop there is no space to draw the resultant, so hence the resultant will be 0. Question number 3 is, if the resultant of the two vectors, each of magnitude A, is also a magnitude of A, the angle between the two vectors will be. ये हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व की थी. दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड उनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो तो उन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना होगा. यस महम एंड लाइबा, यू आर राइट. द एंगल बिटवीन देम विल बी 120 डिग्री. Question number 4 is the magnitude of vector A is equals to 2i plus j plus 2k is. So इस वेक्टर का बेसिकली हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है. So what will be the magnitude of this vector? और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कैसे किया जाता है? इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az square. So use this formula and let me know what will be your answer. Hurry up, girls. What is your answer? Laiba, you're right. The magnitude is 3. Because ax is 2, ay is 1, and az is again 2. Okay, then question number 5 is, when fx is 3 Newton and f is 5 Newton, then fy is equal to. So now this is the tricky question and you have to solve it. Question statement is, when fx is 3 Newton and f is 5 Newton, then we have to find out the f of phi. So we know that fx is equal to f cos of theta. So the very first step is to find out the theta. Theta will be equals to cos inverse fx over f, and then you will substitute this theta in the second equation, which is f sine of theta. So quickly calculate this and let me know your answer. Cos inverse fx is 3, f is 5. So this angle will be equals to 53.2 degree. And if you substitute that angle in this equation, then what will be your answer for f of phi?
No, Huda, the answer is not 2. Yes. Afnan, Laiba, Hasna, Mahan, you're right. The answer is 4 Newton. So option B is the correct answer. Question number 6 is a meter stick is supported by a knife edge at the 50 centimeter mark. RF hangs masses of 0.4 kilogram and 0.6 kilogram from the 20 centimeter and 80 centimeter marks, respectively. Where should RF hang the third mass of 0.3 kilogram to keep the stick balanced? So now this is the question of the torque, the principle of moments, in which the clockwise torque must be equals to the anti-clockwise torque. So we have to use this equation to solve this question. So first of all, there is a stick, and at the 50 centimeter mark, he placed the knife edge, and he hangs the mass of 0.4 kilogram from the 20 centimeter mark. So that if this mark is 0 centimeter, so from this at the 20 centimeter mark, he placed the 0.40 kilogram, and at the other side, at the mark of the 80 centimeter, he placed the another mass of 0.60 kilogram. So now you have to tell at which position he has to place the mass of 0.3 kilogram to balance the stick. So let us consider that the mass of 0.30 kilogram is present somewhere at the distance of x from the knife edge. So now if we want to write down the equation for the clockwise and anti-clockwise torque, we have to consider the pivot, and we are considering the edge point as the axis of rotation. So from this axis of rotation, we will write down the clockwise and anti-clockwise torque. So first of all, the anti-clockwise torques are 0.30 kilogram into x plus 0.40 kilogram into 20 centimeter. This must be equal to the clockwise one, which is 0.60 kilogram into, okay, the distance must be measured from the axis of rotation till the point where the masses are hanging. So the distance of the mass 0.40 kilogram from the axis of rotation is 50 minus 20, which is 30 centimeter. And again, from the center of axis till the 0.60 kilogram, the distance is again equal to 30 centimeter. So if you solve this equation, you will get x is equal to 20 centimeter. So this is the distance from the axis of rotation till this mass. But we have to tell the distance from the 0 mark. And from the 0 mark, this distance will be equal to 30 centimeter. Okay, because the 20 centimeter is the distance between the axis of rotation till this point, but we have to tell this distance. So this distance will be 30 centimeter. Question number 7 is, if AX is equals to 1.5 centimeter and AY is minus 0.1 centimeter, then into which quadrant do the vector A points? अगर x component जो है वो positive है और y component जो है वो negative है, तो हमारा जो आंसर है, जो वेक्टर है, वो किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा? डियर स्टूडेंट्स, हमने 30 सेंटीमीटर इसलिए कंसिडर किया है कि जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके उस पोजीशन तक का था जहां पे वो मैस हैंग कर रहा था. तो ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर था, लेकिन हमें वो वाला डिस्टेंस बताना है जो कि 0 मार्क से हमने मेजर करना है. तो जब टोटल डिस्टेंस जो वो 50 सेंटीमीटर है, तो और आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस 20 है, तो हम उसको 50 माइनस 20 करके ये वाला डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर के इक्वल होगा. इस वजह से हमने 30 सेंटीमीटर कंसिडर किया है इंस्टेड ऑफ द 20 सेंटीमीटर.
Okay, Fatma, your answer is not right. Maham and Fatma, again, your answers are not correct. Afnan, your answer is correct. The quadrant will be 4. In the fourth quadrant, the x values are positive while the y values are negative. So the vector must be point in the fourth quadrant. Then question number 8 is vector A dot A cross B is equal to. If you take the dot product with the cross product of A cross B, then it will be equal to. No, D is not correct. Okay, let us consider the two vectors. Vector A as AXI plus AYJ and vector B as BXI plus BY into J. So when you take the cross product of these two vectors, then you will get AXI plus AYJ. You have to take the cross product. So BXI plus BYJ. Just remember one thing, that AXI into BXI is 0, since the two vectors along the same direction will give the 0 product, because if the two vectors are along the same direction, then the angle will be 0 and the sign of 0 is 0. So the two vectors must be along the opposite direction. So AX into BY, then minus BX into AY, and the direction of these two vectors will be along the Z axis. So if you multiply vector A with the resultant of the A cross B, then it means you are multiplying I unit vector and J unit vector with the K unit vector. So इसके result में I डॉट के और J डॉट के दोनों का आंसर जो है वो 0 होगा, क्योंकि वेक्टर्स जो है वो तब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करते हैं जब वो एक दूसरे के पैरेलल हो इन केस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट. So yes, Malaika, you are right. The right option is option A, that is 0. Question number 9 is two forces of magnitude 20 Newton and 50 Newton act simultaneously on a body. Which one of the forces cannot be the resultant of the two forces? दो forces हैं जो कि किसी भी body के ऊपर act कर रही हैं और हमें उनका जो resultant है वो बताना है कि वो कितना होना चाहिए. Just like अगर किसी भी body के ऊपर जो forces act कर रही हैं उनकी direction same है, सो सेम डायरेक्शन के केस में जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हम ऑब्टेन कर सकते हैं वो 50 प्लस 20 है, जो कि इक्वल हो जाएगा 70 न्यूटन. ये मैक्सिमम हमारे पास रिजल्टेंट हो सकता है. मिनिमम हो सकता है कि अगर इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाए. 50 एक डायरेक्शन में एक्ट करे, 20 एक डायरेक्शन में एक्ट करे, सो 50 माइनस 20 इज 30 न्यूटन. सो जो रेंज है हमारे पास वो 30 न्यूटन से लेके 70 न्यूटन तक की है. इनके बीच में हमारे पास जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड है वो एग्जिस्ट कर सकता है. सो यस, मरियम, नबील, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 20 न्यूटन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो रिजल्टेंट नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस रेंज. Question number 10 is, if the dot product of the two non-zero vectors A and B is 0, then the magnitude of their cross product is. अगर दो non-zero vectors हैं जिनका dot product 0 है, तो उनका cross product का जो magnitude है वो कितना होगा? Just like कोई भी एक vector है A और दूसरा vector है B, तो इनका जो dot product है वो 0 है, और dot product 0 होने का मतलब है कि इनके दरमियान जो एंगल था वो 90 डिग्री का है. क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो नॉन जीरो वेक्टर्स का कभी भी मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा अनलेस अनटिल उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का ना हो. तो अगर एंगल 90 डिग्री का है तो अगर आप इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो ये ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल हो जाएगा ए बी के, बिकॉज साइन ऑफ 90 इज 1. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.
Question number 11 is the sum of the magnitudes of the two vectors of the two forces is 16 Newton. कोई भी हमारे पास दो फोर्सेस हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड का जो सम है वो 16 न्यूटन है. So let's suppose F1 plus F2 is equal to 16 Newton. Then if the resultant force is 8 Newton, अगर उनकी जो resultant force है वो 8 Newton है and it is perpendicular to the minimum force, then the two forces are, हमें F1 और F2 जो है वो basically calculate करनी है और जो resultant है that resultant is equals to 8 Newton. So यहाँ से अगर हम इसको draw करें एक vector diagram, तो vector diagram के according हमारे पास ये side जो है वो एक को हम F1 कंसिडर कर लेते हैं और एक को हम F2 कंसिडर कर लेते हैं और एक वेक्टर जो है वो हमारे पास रिजल्टेंट है. सो यहाँ से बेसिकली हमें इस रिजल्टेंट की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करना है. सो F2 is equals to 16 minus F1 और यहाँ पे अगर हम लोग उसको पाइथागोरस थ्योरम के रूल को अगर हम यहाँ पे यूज करें, सो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ द बेस and hypotenuse square is equals to square of the base and square of the perpendicular side. So f is 16 minus f1 whole square equals to f1 square plus r square, which is the 8 square. So if you solve this by using a minus b whole square formula, so you will get 256 plus f1 square minus 32 f1 equals to f1 square प्लस 64. f1 स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी अगर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो जो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा वो 6 न्यूटन होगा और इस वैल्यू को जब आप f2 की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे सो 16 minus 6 is 10 Newton. So the two forces will be 6 Newton and 10 Newton. So option A is the right answer. Question number 12 is, find the masses of the uneven rod shown in the figure if the center of gravity is 14 centimeter from end A. So अब हमें इस रॉड का जो mass है वो कैलकुलेट करना है और जो mass of the rod है वो एक्ट करेगा at the center of the gravity point which is present from at the 14 centimeter from the end A. और बाकी के डिस्टेंसेस हमें गिवन है. सो अगेन यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की जो इक्वेशन है उसको यूज करना है. अगर हम यहाँ पे इस फल्क्रम पॉइंट को पिवट कंसिडर कर लें, इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर कर लें और इस पॉइंट के अलोंग अगर हम जो है वो डिस्टेंसेस फाइंड आउट करना चाहें तो फिर हमारे लिए इजी रहेगा इस पोजीशन को जो है वो फाइंड आउट करना. तो यहाँ पे क्या है 30 और 14. सो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये हमारे पास 16 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड का डिस्टेंस जो 20 सेंटीमीटर गिवन है. तो क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पे हमारे पास जो है वो 80 ग्राम की वजह से है. 80 ग्राम इंटू 20 सेंटीमीटर which has to be equal to 16 सेंटीमीटर into the mass m और ये mass m जो है वो हमें कैलकुलेट करना है. So this m will be equals to 80 gram into 20 centimeter divided by 16 centimeter. And if you make the calculations, this mass m will be equals to 100 gram. Just confirm me if you get the same answer. Then the question number 13 is, the following diagram shows a uniform rod with its midpoint on the pivot. Two equal forces F are applied on the rod as shown in the figure. Which diagram shows the rod in equilibrium? ऑप्शन ए में हमारे पास दो फोर्सेस हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं. सो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी. सो दिस विल बी नॉट इक्वल टू दैट. सो दिस विल बी नॉट इन इक्विलिब्रियम. सेकंड में हमारे पास जो है एक एच पे फोर्स एक्ट कर रही है और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है. सो दिस विल आल्सो रोटेट द रॉड. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. दिस विल बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज यहाँ पे रोटेशन जो है वो बेसिकली नहीं होगी.
Question number 14 is, for which angle the equation A dot B equals to A cross B is correct? Okay, so A dot B, the magnitude of A dot B is equals to A cross B, while the magnitude of A dot B is AB cos of theta, while A cross B is AB sine of theta. So if you divide AB sine theta by AB cos theta, you will get 1. AB will be get cancelled and sine by cos is tan theta. So theta will be equals to tan inverse of 1, while the tan inverse of 1 is 45 degree. So option B is the right answer. हिबा 12 सेंटीमीटर से हमने 12 सेंटीमीटर नहीं था. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में हमने 16 सेंटीमीटर कैसे कैलकुलेट किया है? टोटल डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 30 सेंटीमीटर और एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमें डिस्टेंस मेजर करना था. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 30 माइनस 14 है. So it is quite simple. आपने just subtraction करके distance calculate कर लेना है. And the last question, question number 15 is, what is the net torque on the wheel of radius 2 meter as shown in the figure? So in this question, the two forces are given 10 Newton and 5 Newton. So you have to tell the net torque produced in this rod. और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर का है. So यहाँ से हमारे पास जो हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, that is the clockwise torque has to be equal to the anti-clockwise torque if you consider from the center. So the clockwise torque must be equals to the anti-clockwise torque. और सेंटर से अगर आप देखो तो यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो 10 न्यूटन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है. तो 10 न्यूटन इंटू 1 मीटर. और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है यहाँ पे that is ओके सॉरी, इसमें जो क्लॉकवाइज टॉर्क है हमारे पास, अगर आप एक एक्स से देखो तो दैट इज द क्लॉकवाइज टॉर्क इज with the negative sign r cross f, where r is the radius of the wheel, the moment arm. So minus 2 into f is 10 Newton. So the clockwise torque is equals to minus 20 Newton, while the anti-clockwise torque will be equal to r cross f, which will be equals to 2 into 5 Newton, which will be equals to 10 Newton. So the total torque, sum of all the torque will be equals to the clockwise torque plus the anti-clockwise torque to get the net torque. So as a result, this will be equals to minus 20 Newton meter plus 10 Newton meter. So this will be equals to minus 10 Newton meter. So this will be negative, which means the torque will be clockwise. So 10 Newton meter clockwise torque will be produced. Now moving towards the conceptual questions, there are the 10 conceptual questions. I will only give you the hints and then you will have to write down these answers in your files as your homework. So अभी के लिए हम सिर्फ इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन इनके आंसर्स आप लोग जो है वो खुद लिखोगे. Question number 1 is it possible to add the three vectors of equal magnitude but different directions to get a null vector? Illustrate with the diagram. Yes, it is possible. अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन हम उनकी डिफरेंट ले सकते हैं, तो अगर तीन वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनकी जो डायरेक्शंस हैं 120 डिग्री पे अगर हम इन तीनों वेक्टर्स को जो है वो प्लेस कर दें, तो इस सिचुएशन में हमारे पास ये तीनों वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 हो सकता है. So yes, we can get a null vector if the angle between the three vectors will be 120 degrees. Question number 2 is the magnitudes of the three vectors are 2 meter, 3 meter and 5 meter respectively. The directions are at your disposal. आप अपनी मर्जी से directions ले सकते हो. Can these three vectors be added to yield a zero vector? So yes, again by using the same diagram, लेकिन अब इस केस में angle जो है वो different होंगे.
क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन आप 2, 3 और 5 मीटर के जो मैग्नीट्यूड्स हैं इनको 0 की रिजल्टेंट यील्ड करने के लिए आप ड्रॉ कर सकते हो। जस्ट लाइक आपने सिर्फ इनमें जो एंगल है वो बेसिकली जो है वो फाइंड आउट करना है। सो अगर आप ले लेते हो 3 मीटर, 2 मीटर एंड 5 मीटर, सो आपने इस तरह से इनको प्लेस करना है कि आपके पास जो रिजल्टेंट है वो लाइक हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग आप ऐड कर रहे हो और रिजल्टेंट को ड्रॉ करने की स्पेस नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज what units are associated with the unit vectors I, j and k? Unit vectors are the vectors with the magnitude of 1 and they have the direction. And we can obtain the unit vector as the vector divided by its magnitude. So vector को जब आप उसके magnitude से divide करोगे तो unit तो cancel out हो जाएंगे. Since it is a ratio, so the unit vectors have no units. They are the vectors which represent the direction and they have the magnitude of 1, but they do not have units. Question number 4 is, can a scalar product of two vectors be negative? Provide a proof and give example. So yes, the scalar product of the two vectors could be negative if the angle is greater than the 90 degree. So you have to prove this by solving the equation by considering any angle, like theta is equal to 100 or 110 or 120. Question number 6 is, suppose you are given a non-zero vector A and the scalar product of A with an unknown vector B is 0. एक नॉन जीरो वेक्टर है A जिसका स्केलर प्रोडक्ट B के साथ 0 है और उसका वेक्टर प्रोडक्ट B के साथ भी 0 है, तो आप B के बारे में क्या कंक्लूड करोगे? एक ऐसा वेक्टर जिसका क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट दोनों 0 हैं और एक वेक्टर उनमें से नॉन जीरो है। तो एक ही सिचुएशन बचती है और वो ये है कि जो वेक्टर B है दैट विल बी इक्वल्स टू द 0 नल वेक्टर। अगर B जो है वो नल वेक्टर है तो चाहे आप उसका डॉट प्रोडक्ट लो या क्रॉस प्रोडक्ट लो, आपका आंसर जो होगा वो 0 ही रहेगा। उमेरा डियर, मैं डेली बेसिस पे जो भी हम एक्सरसाइज जो भी हम पढ़ते हैं उनके पेजेस जो हैं बुक के वो मैं अपलोड कर देती हूँ गूगल क्लासरूम में। सो फ्रॉम द गूगल क्लासरूम यू कैन डाउनलोड द बुक। एज अ होल अभी तक ये बुक जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। Question number 7 is, why a particle experiencing only one force cannot be in equilibrium? So single force से equilibrium attain क्यों नहीं किया जा सकता? Because for a body to be in equilibrium, the net force acting on a body must be equal to 0. अगर single force है तो single force तो acceleration produce करेगी, और अगर acceleration act कर रहा है किसी भी body पे, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम at least two forces has to be applied which will be in equal magnitude but opposite in direction, so that the net force must be equal to 0. Question number 8 is, to open a door that has the handle on the right and the hinge on the left, a torque must be applied. Is the torque clockwise or counterclockwise when the viewed from above? Does your answer depend on whether the door opens towards or away from you? Yes, it depends on either the door is opening away or towards from us. So if you consider this as the hinge and the other point as the axis of rotation, so if it moves in this direction, if you apply the force in this direction, then the direction will be anti-clockwise, and if the force will be applied in the downward direction, then the rotation of this door from the above side will be the clockwise. So yes, it depends on the direction. Then question number 9 is explaining the warning, never use a large wrench to tighten a small bolt. Large wrench means that you are getting the torque as R cross F. So if R is greater, then the torque will be greater. It means you are going to produce a large force.
So if a large force is produced, then it can break the small bolt. So large मोमेंट चार्म का मतलब है ग्रेटर टॉर्क, और ग्रेटर टॉर्क मीन्स के लार्ज फोर्स जो है वो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, और अगर लार्ज फोर्स प्रोड्यूस हो रही है तो वो स्मॉल बोल्ट को जो है वो ब्रेक कर सकता है, ड्यू टू व्हिच द small wrench is used to tighten the small bolt. Then the last question, question number 10 is, a central force is one that is always directed towards the same point. Can the central force give rise to the torque about the point? So what will be your answer? सेंट्रल फोर्स हमारे पास कोई भी ऐसी फोर्सेस का कहा जाता है जो कि हमेशा सेंटर की तरफ जो है वो एक्ट करती हैं, उस लाइन के अलोंग एक्ट करती हैं और उनकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। तो क्या ये सेंट्रल फोर्स जो है ये टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है? टॉर्क बेसिकली हमारे पास है प्रोडक्ट है आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पे मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान एंगल जो है वो एटलीस्ट लाइक मैक्सिमम टॉर्क हमें मिलेगा 90 डिग्री। लेकिन ये केस तो है कि जिसमें हमारे पास पोजीशन वेक्टर और फोर्स दोनों सेम लाइन के अलोंग एक्ट कर रही हैं। So no, the torque will not produce. Answer is no, because the torque and the force and the position vector is along the same line. So along the same line, the torque would not be produced. So that is the end of the today's lecture. If you have any kind of question, then you can ask. We still have 1 minute and 40 seconds. So if you want to ask any kind of question, then you can. Okay, sorry. Question 5 is left. Question 5 is, thanks for reminding Afnan. Question 5 is, A and B are two non-zero vectors. How can their scalar product be 0 and how can their vector product be 0? If the two vectors A and B are the non-zero vectors, like they have some kind of magnitudes, then how to get the 0 scalar and 0 vector product? So if we have the two vectors A and B, then their dot product will be 0 if the two vectors are perpendicular to each other. So if these two vectors are perpendicular to each other, then we get the 0 as a result. And the vector product will be 0 if these two vectors are either parallel or anti-parallel. So for sine of 0 and sine of 180, the product will be equals to 0. So either the parallel or anti-parallel. Okay, Malaika, I will share the MCQs number 10. Its answer is AB. This is the very last minute of today's lecture. If you still want to ask any kind of question, then you can. Okay, dear students, see you tomorrow.